डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा? Welcome, my dear AS students, to the ASRARIA notes coaching classes. Today we are going to study the very important high-yield topic, binomial nomenclature or binomial nomenclature. As I am recording this lecture just before the Junior Botany Intermediate Public Examination March 2024, it is very much high-yield, important, short answer question which is going to come in your examination, upcoming examination. So you are going to get 4 marks SAQs in IP, or you are going to get 1 question regarding this topic in NEET UG 2024 competitive exam, so that you are going to get 4 marks in that exam. In either ways, either board exam, intermediate public examination, you are going to get short answer question, or in competitive NEET UG exam 2024, you are going to get 1 question about this topic. So you are going to confirm your 4 marks gunshot. So this is an AS topic. Right? So welcome to the AS topics and welcome to the ASRARIA notes coaching classes. Let's proceed with the topic binomial nomenclature or binomial nomenclature. This binomial nomenclature or binomial nomenclature was popularized by Carolus von Linnaeus. Binomial nomenclature was popularized by Carolus von Linnaeus, and this scientist is well known as father of taxonomy and founder of modern systematics. C.V. Linnaeus is considered as father of taxonomy as well as founder of modern systematics. What is systematics then? Systematics derived from the Latin word that is systema. Systematics derived from the Latin word systema. What it means? It means systematic arrangement of living organisms. Systematic arrangement of living organisms, right? So the key part of that systematics, right? The key part of systematics is taxonomy. There are 4 processes which are basic to the taxonomy. They are characterization, means seeing the anatomical morphological characters of some plants, because plants shows some specific characters which are specific to them only, right? That process is known as characterization. The next, identification. The process of identifying the newly discovered plant, whether it is newly discovered or it is already a known species, that process is known as identification. The plant which we are seeing is newly identified, has not discovered before yet. Then you need to name the species of the plant, right? That process of naming is called as nomenclature. The process of naming a newly identified plant with a standard, universally accepted scientific name is called as nomenclature. What is the 4th process then? Classification.
Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on the observable characteristics, right? That is known as classification. So these four processes are the basic processes to taxonomy, right? So now we are going to deal with the third process, nomenclature. That is what is our main topic here. Chalo beta. Binomial or binominal nomenclature. The process of naming a newly identified living organism, either a plant or animal, with a standard scientific name or biological name consisting of two words or two components, that is binomial, is called as binominal nomenclature. ICBN. What is ICBN? I stands for International, C stands for Code of, B stands for Botanical, and N stands for Nomenclature. Right? What is ICBN? The full form of ICBN is International Code of Botanical Nomenclature. This ICBN will provide guidelines, rules and regulations for naming a newly identified plant. Right? And what is next? ICZN. And here I stands for International, C stands for Code, Z stands for Zoological, N stands for Nomenclature. Right? What is ICZN? The full form of ICZN, International Code of Zoological Nomenclature, or International Code for Zoological Nomenclature. This ICZN will provide guidelines for naming an animal, a newly identified animal. And ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature, will provide the guidelines for naming a newly identified plant. Right? What is the full form of ICBN? International Code of Botanical Nomenclature. What is the full form of ICZN? International Code for Zoological Nomenclature. ये क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है आपका, फुल फॉर्म पूछ सकता है ICBN का, ICZN का, ऑलरेडी पूछा गया है 2-3 साल पहले. ठीक है, अगर नीट में नहीं पूछेंगे आपको तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, अगर बॉटनी का एग्जाम हो रहा है, इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन तेलुगु एकेडमी का, तेलंगाना स्टेट हो या आंध्र प्रदेश स्टेट हो, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा ICBN. व्हाट डज ICBN स्टैंड फॉर? ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ICBN provides guidelines for naming a newly identified plant. Right? अगर zoology का है तो 2 marks फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा. IP एग्जाम्स, तेलुगु एकेडमी का, तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट का. What does ICZN stand for? International Code of Zoological Nomenclature. International Code for Zoological Nomenclature provides the guidelines for naming the newly identified animal. अब वो गाइडलाइंस क्या है अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. चलो बच्चों, अब वो गाइडलाइंस क्या है देखेंगे अपन. सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम should be in Latin origin. उसका नाम ओरिजिन कहां से रहना भाई? लैटिन लैंग्वेज से रहना, लैटिन से. ठीक है, लैटिन ओरिजिन. क्यों भाई? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है. क्या है? डेड लैंग्वेज है. लैटिन ओरिजिन. अगर वो प्रिंट कर रहे हैं अपन, इफ द साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम इज प्रिंटेड, देन इट इज प्रिंटेड इन italics form. Right? It is printed in italics form.
सबसे पहला गाइडलाइन ये है, क्या है सबसे पहला गाइडलाइन? साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम शुड बी इन लैटिन ओरिजिन एंड इफ इट इज प्रिंटेड देन इट इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स फॉर्म। अब दूसरा क्या है बेटा? अब दूसरा गाइडलाइन क्या है बेटा? दूसरा गाइडलाइन that scientific name consists of two components or two words, that is binomial, hence it is known as binomial nomenclature, right? So those two words are two components, that is binomial. What it is? First word or first component should be generic name, also known as genus, right? And the second word or second component is called as specific epithet, that is species. Two words or two components of binomial. First word is generic name or genus, second word is specific epithet or species, right? What is the third point? That first word, generic name, also known as genus, is a noun and it always starts with a capital letter. It always starts with a capital letter. And the second word, specific epithet, also known as species, right, is an adjective and it is always starts with a small letter. अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहली गाइडलाइन क्या है? Scientific name or biological name should be in Latin origin and if they are printed in italics form. That the scientific name or biological name should consist of two components or two words, that is binomial. First word is generic name genus, second word is specific epithet species. Generic name genus is a noun and it always starts with a capital letter. Specific epithet species is an adjective and always starts with a small letter. Let us see with the example. If you people are the students of Telugu Academy Indian Public Examination of Telangana State and Andhra Pradesh State, then you are going to get first VSAQ question in upcoming March 2024 Junior Botany IPA exams. Okay, give the scientific name of a mango and identify the generic name and specific epithet in it. So what is the scientific name of mango? What is the scientific name of mango? We know the scientific name of mango is Mangifera indica. Two words, two components. First word, first component is Mangifera. Second component is indica. That is the scientific name of a mango. Scientific name of a mango, Mangifera indica. Generic name is Mangifera, starting with a capital M. Indica is a specific epithet starting with small I. ये हो गया आपका एक VSAQ. फिर एनिमल का, अगर आप लायन का लेंगे तो क्या रहेगा लायन का साइंटिफिक नेम? पैंथेरा लियो. अरे ये लियो ने होता है, साउथ मूवी जो आई थी लियो, वैसा लियो नहीं, लायन, पैंथेरा लियो. सो फर्स्ट वर्ड क्या है? जेनेरिक नेम पैंथेरा, स्टार्ट्स विद ए कैपिटल पी, राइट. सेकंड वर्ड लियो, स्टार्ट विद ए स्मॉल एल. ये आपका साइंटिफिक नेम ऑफ लायन हो गया. अगर वही साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर देखेंगे अपन तो क्या रहेगा? साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस. पैंथेरा पी कैपिटल, टाइग्रिस का टी स्मॉल टी. ये आपका साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर. पैंथेरा इज जेनेरिक नेम एंड टाइग्रिस इज ए स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज नेम. डन. ये था आपका थर्ड वाला पॉइंट. एंड फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? इफ बोथ generic name and specific epithet
if they are handwritten, then both are separately underlined. तो आपको आईपी एग्जाम में स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश स्टेट अच्छे से गौर से सुनिए, जब आप एग्जाम में लिखेंगे गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो एंड व्हाट इज द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट इन इट, तो आप लिखना मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका is a scientific name of mango. Mangifera is generic name, hence starts with the capital M. Indica is the specific epithet, hence starts with a small I. तो आप सेपरेट से अंडरलाइन करना उसको, ये वाला पॉइंट है. हैंड रिटन, अगर जीनस एंड स्पीसीज साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन, देन बोथ द जीनस एंड स्पीसीज आर सेपरेटली अंडरलाइन. मैंजीफेरा और इंडिका को अंडरलाइन करना है. स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश, ये पक्का क्वेश्चन आता है आपको बीएससी के लिए. ठीक है. अब लास्ट में क्या गाइडलाइन है भाई, जो ऑथर जो साइंटिस्ट प्लांट को डिस्क्राइब करा, आइडेंटिफाई करा फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका नेम आइदर फुल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में या अब्रीविएटेड फॉर्म में लिख सकते. कब? एंड ऑफ द साइंटिफिक नेम आफ्टर स्पीशीज. मैंजीफेरा इंडिका जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों को अंडरलाइन कर लिए. साइंटिफिक नेम लीनियस डिस्कॉर्ड करा, लीनियस लिन एल. इसका मतलब क्या है? लीनियस वाज द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब और आइडेंटिफाइड द मैंगो मैंजीफेरा इंडिका स्पीशीज फॉर द फर्स्ट टाइम. ये था आपकी गाइडलाइंस ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर. वही अगर एनिमल में आएंगे तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो के बाजू आप क्या करना, पैंथेरा को अंडरलाइन कर लेना, लियो को अंडरलाइन कर लेना. सेम लीनियस आर लिन आर एल. It means that species of lion, Panthera leo, was first identified and described by scientist or author Linnaeus. इसका मतलब ये हुआ. तो these are the guidelines of binomial nomenclature. अगर आपको short answer question में पूछा explain about binomial nomenclature, students of Telangana state and Andhra Pradesh state, तो आपको क्या लिखना है? Binomial nomenclature or binomial nomenclature was popularized by Carolus von C.V. Linnaeus, right? Then आप लिखना है द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ए न्यूली आइडेंटिफाइड प्लांट विथ ए स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स और टू वर्ड्स, दैट इज बाइनोमियल, इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. और प्लांट्स का रहा तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर विल प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर नेमिंग ए न्यूली आइडेंटिफाइड प्लांट. अगर एनिमल्स का रहा तो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर विल प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर नेमिंग ए न्यूली आइडेंटिफाइड एनिमल. क्या है गाइडलाइंस? को बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन ओरिजिन. क्यों बेटा? लैटिन डेड लैंग्वेज है. अगर वो प्रिंट हुआ तो इटैलिक फॉर्म में प्रिंट होना. दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक फॉर्म्स. ठीक है. टू वर्ड्स कंपोनेंट दैट इज बाइनोमियल ऑफ द साइंटिफिक नेम. फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम जीनस, सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज. Generic name genus is a noun, always starts with a capital letter. Specific epithet species is an adjective, always starts with a small letter. Example, mango का आपका VSQ क्वेश्चन है TS और AP स्टूडेंट्स के लिए. Give the scientific name of mango, identify the generic name and specific epithet in it. Scientific name of mango is Mangifera indica. Generic name is Mangifera and starts with a capital M. Specific epithet is indica and starts with the small I. ठीक है. Then, if the biological name or scientific name is handwritten, both the genus and species are separately underlined. Mangifera indica, Mangifera भी underline हो गया, indica भी underline हो गया. Last में, the name of the author or scientist who identified the plant species or animal species for the first time and named it with the scientific name for the first time can be written either in full form or in short form or in abbreviated form at the end of the scientific name of the species. For example, Mangifera indica, Linnaeus or Lin or L. It means that species of mango, Mangifera indica, is first time identified and described by Linnaeus. For suppose वही अगर animals में चल जाएंगे अपन तो Panthera leo, Linnaeus or Lin or L. It means the species of lion Panthera leo first time identified by Linnaeus and named by Linnaeus for the first time. ये था आपका गाइडलाइंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए,
मेरे चैनल असरारिया नोट्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सका उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। चंद ही दिन बचे हुए एग्जाम के लिए, बहुत काम में आएगा इंशाल्लाह, एग्जाम में पक्का आएगा ये। अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो नीट यूजी में तो 100% 4 मार्क्स गन शॉट आपका एएस टॉपिक है ये। तो लाइक करिए, शेयर करिए, फीडबैक अपना दीजिए कमेंट सेक्शन में। We'll meet in the next topic. Till then, take care. Monster.